Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Al Nafi Academy and this is Cambridge International O-Level Biology, chapter number 2, Diffusion and Osmosis. We covered our two subtopics. Number 1 is diffusion, number 2 is osmosis. Now we are on 2.3 topic, which is active transport, and in this video we will discuss what actually means by active transport. So active transport is the movement of molecules or ions from a lower टू आ हायर कंसनट्रेशन. अब आप ये देखेंगे कि हम डिफ्यूजन में भी ये बोलते रहे कि जी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की हायर से लोअर. फिर हम ऑस्मोसिस में भी ये कहते गए कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन. सो it's easy to recognize this that active transport is opposite of diffusion and osmosis. अब क्या हो रहा है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. अब ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एनर्जी फ्रॉम रिस्पायरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब रिस्पायरेशन एक प्रोसेस होता है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में. सो it requires those energy in the form of ATP. So energy require basically हम ये कह रहे हैं कि इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि ATP प्रोवाइड करता है. अब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अगर हम ये देखें कि पानी एक स्लोप से आ रहा है, एक स्लोप है, एक स्लाइड है और ऊपर से हमने पानी डाला और वो नीचे की तरफ आई जा रहा है, तो उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए. अब यही अगर पानी हमने नीचे से ऊपर को चढ़ाना है तो वो जाहिर बात है वो खुद तो नहीं जाएगा. पानी कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ तो नहीं जा सकता. हमें उसके लिए पंप्स चाहिए, कुछ एजेंट चाहिए, कुछ प्रोसेसेस चाहिए जो वाटर को एक एनर्जी दें जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर की तरफ मूव करे. तो जो लो से हाई की तरफ जाना है इसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, पर हाई से लो की तरफ आने में कोई एनर्जी नहीं चाहिए, वो तो मूव कर जाएगा खुद ही ऑटोमेटिकली, नेचुरली प्रोसेस है. सो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस को हम कहते हैं कि ये जो दो प्रोसेसेस हैं ये पैसिव प्रोसेसेस हैं एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव प्रोसेस. Okay, diffusion and osmosis are both passive processes, which means that they happen because of their kinetic energy of the molecules. Kinetic energy means the energy that it possesses due to their motions. So ऐसी energy जो motion produce कर रही है, so they do not require an external source of energy. Both diffusion and osmosis rely on molecules diffusing down a concentration gradient, rather like water running a downhill. However, sometimes in cells, molecules or ions have to be accumulated inside the cell when there is little of that substance present outside. कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बाहर तो कंसंट्रेशन कम होती है लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर उनकी ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे वो मूवमेंट होती है फ्रॉम लो टू हाई. अब सेल में वो ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं लेकिन बाहर वो कम मौजूद हैं और हमें वो सेल के अंदर ही चाहिए और ज़्यादा, तो यहाँ पे ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगर हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट हो रही है जो हमें चाहिए सेल के अंदर चीज़ें. तो दैट मीन्स दिस इज़ अ मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई कंसनट्रेशन एंड दिस प्रोसेस वर्क्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. अब ग्रेडियंट हमने कहा था एक इंक्लाइन टाइप है, तो अब इस मूवमेंट ने अगेंस्ट जाना है. जैसा कि हमने ये कहा था कि ये हमारे पास एक ग्रेडियंट होता है और ये हमारे पास हाई है और ये लो है, और डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस ने हाई टू लो जाना है. बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अगेंस्ट इट. यहाँ पे एरो यूँ हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, फ्रॉम लो टू हाई. दिस इज़ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सी जी,
concentration gradient, and active transport is the movement from low to high against the concentration gradient. So this all mechanism is known as active transport. So a concentration gradient occurs when the concentration of particles is higher in one area than another. In passive transport, particles which will diffuse down a concentration gradient from the areas of higher concentration to the areas of lower concentration until they are evenly spaced. So this is the higher concentration, this is the higher concentration and this is the low concentration. ये इस डायरेक्शन में डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस की मूवमेंट होती है एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ये लो से हाई की तरफ जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ ऑपोजिट ऑफ डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मूव्स मटेरियल्स फ्रॉम लोअर टू अ हायर कंसंट्रेशन, while passive transport, which is diffusion and osmosis, moves materials from higher to lower concentration. Active transport requires energy to proceed, while passive transport doesn't require the input of extra energy to occur. Now let's watch a video. In the first part of this video, we looked at diffusion for the movement of gases and osmosis for the movement of water. They were things that could easily move from a high concentration to a low concentration. That makes sense. So what is active transport for? Well, the clue is in the name, active. Work has to be done. Active transport moves molecules from a low concentration to a high concentration against the concentration gradient. This is the opposite of diffusion and osmosis, and because it is not the natural direction, energy is required to make it work. Active transport is carried out by protein carriers within the cell membrane, and they have a specific binding site for the exact molecules they are transporting. The substance binds to the protein carrier on the low concentration side, and using energy from respiration, the protein carrier releases the substance on the other side of the cell membrane, where it is already at a high concentration. See the difference between diffusion? No energy is needed because the molecules can just slide down the concentration gradient, whereas in active transport they are joining the crowd, and so more effort is needed, hence the ATP. Active transport allows cells to absorb substances from very dilute solutions, such as root hair cells taking in mineral ions from the soil, and in kidneys so we can hang on to the substances our body needs, such as glucose and sodium ions. Cells which carry out a lot of active transport often have lots of mitochondria to give them the energy they need. So from these two parts, you should know how cells take in substances and get rid of waste by diffusion, osmosis, and active transport. Just remember that for diffusion, the substance moves down the concentration gradient from a high concentration to a low concentration. Just think of a slide. You don't need any energy to go from high to low. It's easy. Whereas active transport is the opposite. The substance needs to move up the concentration gradient from low concentration to a high concentration. Think of climbing a ladder. You need energy to go from low down to high up. So this is all about active transport. I hope you like the lecture, you understand the concept of the active transport, and this is the very easy video जो कि मैंने आपको दिखाई है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट नीड्स एनर्जी
इसने एक किसी मॉलिक्यूल ने सेल के अंदर आना है, क्राउड को ज्वाइन करना है, तो उसे एक प्रेशर चाहिए होगा उस क्राउड के अंदर आने के लिए, जो कि एटीपी प्रोवाइड करती है। एनर्जी चाहिए, जिसकी वजह से सेल के पार्टिकल्स जो हैं वो लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थैंक यू।